Hi everyone, my name is Vinita, your mentor for UPSC Maths Optional. Here on this channel, you will find important resources, guidance, important topics of Maths Optional plus PYQs solved year-wise. Some practice sessions also I have uploaded on the channel. Do like, share and subscribe. Also, you can visit this website. The link of this is given in the description below this lecture. यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PYQs के PDFs मिल जाएंगे. अनसोल्ड है ये, इनके जो सॉल्यूशंस है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे. Also, you can download the syllabus and subject wise book list and I'll be uploading the revision notes as well. ये सब ready है, I just have to upload, so revision notes भी इसमें update हो जाएंगे. You can download our application if you want to cover Maths Optional complete course from the very scratch. If you are a beginner, then this course is starting for 2026 people and it is starting from 15th of March and it will be a complete course. It includes everything theory plus practice plus previous year questions are also included in it. Answer writing and other helpful guidance is there. Comprehensive notes इसमें available रहेंगे. You will have to make your own notes, but revision notes I'll be providing you. And if you have completed your syllabus and you just need practice plus test series, you can check this test series course as well. The link of this application is also given in the description below this lecture. Let's start our session now. So this is a PYQ series and this is the question from 2024 UPSC Maths Optional Real Analysis. जो इसमें टॉपिक है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है. ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इसका कन्वर्जेंस चेक करना है. 0 to 2 log x by root 2 minus x dx. क्योंकि मेरी जो लिमिट्स है वो फाइनाइट हैं तो यहाँ पर ये टाइप 2 इंटेग्रल, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो सकता है. अगर लिमिट्स इनफाइनाइट होती तो ये टाइप 1 इंटेग्रल होता है, टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है. बट हमें ये देखना है कि जो फंक्शन है जो टाइप 2 इंटेग्रल होता है, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटेग्रल, in that integral the function remains unbounded, the function remains undefined at one of the limits or both the limits. So we need to check limit x tends to 0 of the integrand log x divided by root 2 minus x. Now you know that log 0 goes to minus infinite, so it means at 0 my function is unbounded. Now let's check at x approaching to 2. So log x divided by under root 2 minus x, which is equal to log 2 divided by 0. That means it is infinite. So the function is undefined at both the limits. So we can say the function is type 2 improper integral and it is undefined at the lower limit as well as at the upper limit. So this is type 2 improper integral. Improper integral. And fx log x by root 2 minus x is undefined at both 0 and 2, unbounded at both 0 and 2. And whenever my integral is unbounded at both the limits, we need to break this integral. इसको break करना पड़ेगा. So let's break it at 1. So we can write it as 0 to 2 fx dx as equal to 0 to 1 fx dx plus 1 to 2 fx dx. Since at 1 my function is already bounded. So now let's suppose this is I1 and let's suppose this is I2. Let's first check the convergence of I1. I1 क्या है? I1 is equal to 0 to 1 log x divided by root 2 minus x dx. See, यहाँ पर 0 पर log x less than 0 होता है. If you look at the graph of log x ना, log x का graph at 1 log 1 is 0 and then it goes something like this. So at 0, I mean when we approach to 0, my function remains negative. log x negative होता है
as between 0 और 1, between 0 to 1 log x is negative. So इसलिए हम minus fx लेते हैं. So we need to take minus fx here. So since log x is less than 0, since log x is less than 0, between 0 to 1, between 0 to 1, we need to take gx as equal to minus fx, minus fx, and now we need to take 0 to 1 gx dx, gx dx. That means we need to take a minus sign with it. That means 0 to 1 minus log x divided by root 2 minus x dx. ठीक है, इस तरह से हमें इसको लेना पड़ेगा. नाउ कंपैरिजन टेस्ट लगा दो या फिर म्यू टेस्ट लगा दो. कैसे लगाते हैं म्यू टेस्ट? सी आप क्या करो, वी लेट ए फंक्शन x टू द पावर n. हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगा देते हैं. सो लेट आई टेक लेट gx तो हमने ऑलरेडी ले लिया. लेट द फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू ऐसे क्वेश्चंस में ना आप कंपेयर कर दो फाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर n से. You compare this function to phi x is equal to 1 by x to the power n because we cannot know n here. यहाँ पर हम n सीधा सीधा पता नहीं कर सकते हैं. So limit x approaching to 0 gx by phi x, gx by phi x क्या आ जाएगा? This is equal to limit x approaching to 0. 0 क्यों? Because the function is unbounded at 0. 0 पर unbounded है. So ये आएगा minus log x डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस एक्स एंड ऊपर आ जाएगा ये x टू द पावर n. नाउ इफ यू लुक एट दिस, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. इफ आई इवेलुएट दिस लिमिट ना x टू द पावर n log x, और यू कैन टेक ए माइनस साइन विद इट एज वेल. 0 पर एज x अप्रोचेज टू 0 इट बिकम्स माइनस इनफाइनाइट इंटू 0, सॉरी प्लस इनफाइनाइट इंटू 0. सो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log x minus log x divided by 1 by x to the power n, and now it is infinity by infinity form, which is an indeterminate form, and I can apply L'Hopital rule here. So limit x approaching to 0 it is minus 1 by x. डिफ्रेंशिएटिंग ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे आ जाएगा माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1, माइनस एन सॉरी प्लस 1 नहीं, माइनस एन माइनस 1, आई एम रियली सॉरी, माइनस एन माइनस 1 डिफ्रेंशिएट किया है ना. सो माइनस से माइनस चला जाता है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 बाई एन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ से सिंपली आंसर आएगा 0. लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 बाई एन इंटू एक्स टू द पावर एन एंड द आंसर इज 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल ऑलवेज बी 0 इफ एन इज ग्रेटर देन 0. एन अगर पॉजिटिव है तो फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स दिस लिमिट इज इक्वल टू 0, एंड वेन एवर दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 इट मीन्स basically gx is less than phi x, gx is less than phi x. Then I can say that gx is less than phi x, और अगर ये converge करेगा, if it converges then it implies this converges, this converges. Now you tell me in type 2 improper integral ये कब converge करता है? It converges when n is less than 1. So it converges when n is less than 1. When n is less than 1. So it means it implies by comparison test 0 to 1 gx dx, 0 to 1 gx dx converges if n is less than 1, if n is less than 1. और सेम fx का हो जाएगा. So it implies 0 to 1 fx dx converges if n is less than 1, n is less than 1. ठीक है. So this is for the I1. Now let's discuss I2. I2 का डिस्कस कर लेते हैं. ये मैं इरेज कर देती हूँ. Now for I2 it is very simple. For I2 I have
we have I2 as equal to, we have I2 as equal to 1 to 2 log x divided by root 2 minus x. See, between 1 to 2 now log is positive. After crossing x-axis, na x-axis at 1, it remains positive. So we don't need to take a negative sign here. And this function is undefined at 2. So ये improper integral है at x is equal to 2. So limit x approaching to 2 log x हम कंपैरिजन टेस्ट ही यूज करेंगे रूट 2 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 5x. 5x क्या लोगे? इसमें तो बहुत सिंपल है. माई फंक्शन इज अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ दिस. My function is undefined because of 1 by root 2 minus x. So what if I cancel it? What if I cancel 1 by root 2 minus x? Then my function will be defined and I'll get the limit, finite limit मिल जाएगी मुझे. So 5x को आप वही let करोगे 1 by root 2 minus x, जिसकी वजह से फंक्शन undefined है. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ हमने क्यों नहीं किया? यहाँ हम बता सकते हो कि 1 by x के पावर में क्या लूँ so that my function remains, function becomes defined. ऐसा नहीं है ना. So here because the function was undefined because of log x. It was undefined because of log x. So 5x के लिए I have to take an arbitrary power. इसलिए I had to take arbitrary power. But here I know that I need to cancel this root 2 minus x. So I'll take the same power. So I'll take 1 by 2 power. So अब निकाल दो यहाँ पर. So limit x approaching to 2 log x divided by root 2 minus x into root 2 minus x. Cancelled and the answer is log 2 which is finite plus non-zero. ठीक है. So it implies 5x and our function 1 to 2 5x and 1 to 2 log x by root 2 minus x converges and diverges together. Converges plus diverges together. दोनों साथ में converge diverge करते हैं. अब आप बताओ मुझे ये converge करेगा या diverge करेगा? Because it is type 2 and you know that 1 by 2 is less than 1. So ये converge करता है. It converges. So it implies 1 to 2 log x divided by root 2 minus x dx converges. So I2 converge करता है, I1 converge करता है. So we can say that our improper integral converges. So coming to here. So basically because ये दोनों converge करते हैं, it converges, so it implies I converges. All right, so this was our question from 2024 math.